So hello everyone, welcome back to the Dynamic Dev. My name is Ankit and this is your brand new series of DSA with Dart. So आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं the basics of Dart programming language like syntax, data types, variables and many more. So this video is very important to learn basics of Darts and to continue the DSA in Dart. So let's continue with the basic syntax of the Dart. So Dart is an object-oriented programming language, which is basically used in the Flutter framework, but it is great for a standalone programming too. So this is my terminal, and I have already written the basic syntax of Dart. Here, the void represents that means the function does not returning anything, and this is the function name. And here I am printing the hello world, which is the print function which is basically used to print the any string or any variable on a console. So let me run this. So as you can see that the hello world is printed. So this is the basic syntax. So next we will continue with the variables and the data types in Dart. Let me go to my terminal and I'll explain you what is variable and what are the different data types in Dart. So this is my terminal. What is variable? Variables are basically used to store the data and you can access it using the variable name. So there are different ways you can declare your variable. Let me first introduce the different data types in Dart. So we will see the different data types in Dart. So there comes int, which is used to store the integer values. Then comes double. Double is used to store the floating point or the fractional values. So if you store the fractional value in the int type, it will show you an error. And in double, you can store fractional value as well as the normal integers. So it will not give an error. So let me store the fractional value, like we will store 3.4 and it can store it. Now comes string is basically used to store the name, like fruit name, some public name or sentences, etc. A set of characters. And comes boolean in Dart, which is known as bool. So bool is basically used to store the there are two main values that is stored in bool, like true or false, 0 or 1, right or wrong. You can store that type of value in this data type. Present. So in present variable, you can store the student is absent or present. So I'll store true. And then comes list. Here you can define the data type, like int. I'm defining int, and you can store different numbers in a same variable. In numbers, you can store more than one values. I can store 2, 3, 4, 5, and you can access it using it index. There are different types of operation in list. I'll explain you in my next video. In this video, we are covering the basics of Dart, so I'll not go in deeper in list. Next is map. Map is like a dictionary where you can store the data in key value pair. Like we use the map keyword and then we define the two key and value data type. Like I'm defining the key value, key should be int type and the value should be string type. Then we define the variable name, like I'm defining student 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 data. In curly braces we'll define the value, like 101 is Ankit, then comma, then 102 is Manoj.
and at the end we have to give semicolon. So this is how a map is created. So these are the data types in Dart. So there is another way of declaring a variable. You can use a var keyword. Var is basically does not define the data type implicitly, and instead of you implicitly declaring the variable's data type, you can just give it var, and when you store the data different data in in that variable, it will automatically detect the data type of the variable. So coming to the next, there are two more keywords which is used to declare the variable final and const. The final and const are basically used to declare a variable whose value are going to be constant throughout the program. Final keyword is basically used when you don't know the value in advance. It is the runtime constant. So let me declare it final value. We have written final. Then we're going to get the current date and time. So here we do not know what is the current time now. So at the runtime, the current time variable value will be declared, and it will not change throughout the program. We can use it like date and time. So this is the string, and here is one, and यहाँ पर एक और concept है string interpolation. So यहाँ पर हम लोग डॉलर का साइन यूज करते हैं, एंड देन हम लोग देते हैं करंट टाइम वेरिएबल नेम. सो वेरिएबल ये क्या करता है कि जो भी करंट टाइम वेरिएबल का वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग के साथ इंटरपोलेट कर देगा और ज्वाइन कर देगा. सो आज का डेट और टाइम आ गया. एंड कांस्टेंट कीवर्ड इज यूज्ड when you know the variable value in advance and it is not going to change throughout the program. A constant keyword is a compile time constant where you know the value in advance 5. So अगर इसको हम लोग प्रिंट करें, so date of 5. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Next we are going to see the operators and the expressions and Dart. So there are arithmetic operators, comparison operators, and logical operators. So let us first see the arithmetic operators. Let me just declare two variables of n type, int a that is equals to 20, and int b which is equals to 30. Arithmetic operations करते हैं like addition, subtraction, multiplication, division, or there are two more different types of arithmetic operations, which is variable division and the modulus. So हम लोग पहले देखेंगे एडिशन ऑपरेशन, जहाँ पर हम लोग वैल्यूज को ऐड कैसे करते हैं. a प्लस b, and I'm just going to copy it. इसको कॉपी कर लेता हूँ बस, एंड देन उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे. सो एडिशन में क्या होता है कि so this variable is used to comment the single line. So a plus b is 50. Now let us see the subtraction. As you can see that minus 10, and then we are going to see the multiplication. So star is basically used to multiply the two variables. As you can see that 600. Now let us see the division. So this is the division, and there is two other types of division, which is modular, which gives you the remainder. So
this gives you only remainder, and the other type of print or the other type of division is a tilt operator and then divide. So it just gives only the number which is left side of the point decimal. So here's the output. As you can see that addition, subtraction, multiplication, and this is the division, and this is the modular division, which gives you only the quotient, and this is the tilt operator division. Now let us see the comparison operators. So comparison operators is basically used to compare the two values, and it will give you the answer in boolean format, true or false. That is, a is equals to b, so it will give you false. Let me write all the comparison operators and I'll explain you one by one. Less than, greater than, less than, equals to, greater than, equals to, not equals to. So these are some comparison operators which is used in Dart. So equals to is used to check if both the values are equal. Less than is used to check this value, the a is whether a is less than b or not, and greater than, which is used to check a is greater than b or not, and a is less than or equals to b. Then this operator, greater than or equals to operator, is used whether the value is greater than or equal, and the exclamation mark is that is equals, that is not equals to. Exclamation is basically used to check which basically is not operator. So let us see the logical operators. So logical operators are and, or, and not. So this is not the way to declare the variables. Logical operators, print. So and operator is basically used to check whether two conditions are satisfying or not. If the two conditions given are not satisfying, then it will give you and false boolean value. So let me give the condition. It is a plus b equals to 50, and so for and we will use the ampersand, and a minus b is equals to 30. So if the condition is true, it will give you true, or other, if the both conditions satisfied, it will be true or else false. So as you can see that it is giving false because because both the conditions are not satisfying. If we give the or operator or logical operator, so here we will use two pi symbols. So as you can see that it is giving true because one of the condition is satisfying, like a plus b is 30, of a plus b is 50. So let us continue with the control flow in Dart. कंट्रोल फ्लो जैसे कि इफ कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जैसे मैं पहले डिक्लेयर करता हूँ दो वेरिएबल, इंट ए जो कि है 50 एंड इंट बी है 60, बी है 60. सो इफ कंडीशन में हम लोग पास कर सकते हैं कि जैसे इफ जो है, इफ मेरा ए जो है वो ग्रेटर लेस है बी से, तो प्रिंट करना, a is less than b. सो ये जो है a इज, अगर इफ a जो है वो मेरा b से लेस हुआ तो ये प्रिंट करेगा, एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे
एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे नो, ए इज नॉट लेस देन बी। सो इसको अगर हम लोग रन करें तो हमको मिलेगा क्या कि ए छोटा नहीं है बी से। एंड यहाँ पर हम लोग वन कंडीशन पे पास कर सकते हैं यूजिंग एल्स इफ। सो इसके अंदर हम लोग कंडीशन पास करेंगे कि ए बड़ा है बी से, तो प्रिंट करना ए इज बिगर देन बी। इसको रन करते तो हमें मिलेगा यस ए इज लेस देन। सो ये चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक कंट्रोल फ्लो इन डार्ट। इसमें हम लोग कंट्रोल फ्लो के अंदर ब्रेक यूज कर सकते हैं, लाइक ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ब्रेक कर दो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लूप्स इन डार्ट। सो द फर्स्ट लूप इन डार्ट इज फॉर लूप। पहले एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं इन टाइप का। यहाँ पर मैं बार बार इंट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बस एक्सप्लेन करना है आपको। आप दूसरा भी डेटा टाइप ले सकते हो या फिर आप वेर कीवर्ड यूज करके कोई भी टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट डेटा स्टोर करा सकते हो इन लिस्ट। और यू कैन यूज डायनेमिक कीवर्ड वेर आप डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स एक लिस्ट में स्टोर करा सकते हो। सो मैं स्टोर कराता हूँ 6 7 8। सो ये मेरा बेसिक एक लिस्ट हो गया। सो एक फॉर लूप चलाते हैं जो कि नंबर प्रिंट करेगा फ्रॉम 1 to 10 फॉर प्रिंट आई जिस इक्वल्स टू, हम लोग आई की वैल्यू अभी इनिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं 0। एंड ये जो होता है वो फॉर लूप के अंदर ही एक्सेसिबल रहता है। एंड उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं मतलब कंडीशन चेक करते हैं कि आई जो है वो लेस देन। पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल जो काउंटर वेरिएबल होता है, एंड देन उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं देते हैं कंडीशन सेमीकोलन के बाद कि कंडीशन मेरा आई जो है वो लेस रहना चाहिए 10 से। जब तक लेस है तब तक आई प्लस प्लस करो, मतलब ये जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आपको मैं ये बता दूं तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर हम माइनस माइनस यूज करें तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि एक एक करके वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करता रहता है और डिक्रीमेंट करता रहता है। सो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करें अगर आई को, हमको 1 से लेके 9 तक की वैल्यू मिलेगी बिकॉज 0 से लेके 9 तक की वैल्यू मिलेगी बिकॉज ये जो है वो लास्ट एलिमेंट को लेता नहीं है। अगर मैं इक्वल्स टू डाल दूँ तो 10 तक की वैल्यू लेगा, 10 तक प्रिंट करेगा। सो ये था बेसिक फॉर लूप। फॉर लूप और भी दो टाइप से लिखे जा सकते हैं, जैसे कि मैं लिस्ट को अभी जो मैंने लिस्ट डिक्लेयर की है उसमें एक एक वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। वो है ये जहाँ पर हमने आई डिक्लेयर किया है, आई इन नंबर, तो नंबर के एक एक वैल्यू को वो एक एक करके इटरेट करके प्रिंट करता रहेगा। ये मैंने प्रिंट किया तो आप देखोगे यहाँ पर 2 से लेके वैल्यू प्रिंट हुई है यहाँ पर। इसको मेरे को कमेंट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो ये इस लिस्ट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट करके उसने प्रिंट किया है। एक और फॉर लूप है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वो एक ऐसा है कि लाइक नंबर डॉट फॉर ईच। सो वो क्या करेगा, नंबर के अंदर जाएगा, हर एक के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे एक अलग, जैसे हम लोग डिफाइन कर रहे थे आई। सो आई डिफाइन किया और वो इक्वल्स टू प्रिंट। सो ये भी एक फॉर लूप है जो कि फॉर ईच फंक्शन का यूज़ करता है। और ये हमारा इटरेटर वेरिएबल है जो कि हर एक वैल्यू, मतलब एक बार इटरेट करेगा तो 2 को आई में रखेगा, 3 को, फिर 4 को, ऐसे ही। और अगर प्रिंट कराए सो इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, एज यू कैन सी दैट। सो ये 3 टाइप ऑफ फॉर लूप है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में हम लोग पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई,
इक्वल्स टू 0। जब तक फिर वाइल लूप में हम लोग फिर उसका यहाँ पर कंडीशन देते हैं कि आई जब तक लेस है 10 से, आई जब तक लेस है 10 से तब तक प्रिंट करो आई की वैल्यू। और प्रिंट करने के बाद आई में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कि वो इंक्रीमेंट करता रहे आई की वैल्यू, और उसको अगर प्रिंट करेंगे तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू मिलेगी। सो वाइल लूप में पहले वो कंडीशन चेक करते हैं, देन उसके अंदर के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एंड इन डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले वो एक बार पहले एटलीस्ट एक बार तो वो रन होगा एंड देन वो वैल्यू प्रिंट करना शुरू करेगा। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। देन हम लोग देखते हैं स्विच केस में क्या होता है कि पहले वो चेक करता है कि ये जो मेरा वेरिएबल का वैल्यू है केस के साथ मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो ये प्रिंट कराएगा, एंड देन अगर नहीं कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट कंडीशन वो प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पर हमने ब्रेक यूज़ किया है कि जैसे अगर मंडे प्रिंट हो जाता है, एक कंडीशन मैच हो गया, द मल्टीपल कंडीशन जो कि मैच करे, जो पहला कंडीशन मैच होगा वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा, एंड देन उसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू अगर यहाँ पर लिखते हैं तो फर्स्ट कंडीशन मैच होने के बाद अगर ये मैच होती है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। सो अगर उसको हम रन करते हैं तो हमें मिलेगा येस दिस इज द स्टार्ट ऑफ वीक। सो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज फंक्शन एंड हाउ वी कैन डिक्लेयर फंक्शन एंड पास द आर्ग्यूमेंट इन इट। As you can see that this is also a function, but this is our main function. We are going to declare int type function int, and then we are going to declare int num, and इसके अंदर लोग पैरामीटर पास करेंगे जैसे कि int I, एक int I पास हो रहा है। ये जो होता है वो डेटा टाइप होता है कि ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न करने वाला है, किस डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न करने वाला है। सो अगर यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग देते हैं तो हमें रिटर्न में देना पड़ेगा स्ट्रिंग। सो अभी हमने एक नम नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम लोग ने वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास किया है आई पैरामीटर। सो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं टी रिटर्न, हम लोग इस आई का स्क्वायर रूट रिटर्न करेंगे। सो आई यहाँ पर कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। लाइक एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, बट एक हमारे पास यहाँ पर एक ही फंक्शन है तो हम उसको खाली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कॉल करेंगे। हम लोग पास करेंगे जैसे आई की वैल्यू 5, और अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर देता हूँ प्रिंट फंक्शन में। सो अगर इसको हम लोग रन करें तो हमें 5 5 25 मिलेगा। अगर हम लोग किसी भी फंक्शन का डेटा टाइप वॉइड दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वॉइड से, तो वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एंड इसके जगह पे हम लोग डेटा टाइप भी दे सकते हैं। सो दिस इज इट। सो ये था डार्ट का बेसिक, एंड इसमें हमने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड सिंटैक्स, एंड फॉर लूप, वाइल लूप, बेसिक लूप्स, कंट्रोल फ्लो इन डार्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ you like the video, do like, share and subscribe to my channel, and hit the bell icon to get the latest notification from this channel. And in next video we are going to see the list, which is also known as array in another languages. So thank you for now. Till then, happy coding.